Hello guys, welcome to Archi Education. So today I am going to discuss about Agrobacterium tumefaciens, natural genetic engineer. ओके सो आपने सुना ही होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के बारे में। बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो नाउ अडेज बहुत सारी अब तक तो बहुत सारी इसकी स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं। बट हम यहाँ पे जो ट्यूमेफेसियंस है उसको ही यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसी भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन सा क्या चीज है ऐसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, किस टाइप का होता है, ग्राम नेगेटिव है या फिर ग्राम पॉजिटिव है। इसके अलावा कौन सी चीज है जो यहाँ पे हम जिसका यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, तो वो टीआई प्लाज्मिड में कौन कौन से जीन्स होते हैं। इसके अलावा क्या चीज होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटाबॉलिज्म के रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी जीन को हम रिप्लेस करते हैं, कहाँ पे हम अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं। सो वी विल सी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens here, because if I will make the whole video means transformation as well as the agrobacterium properties, advantage, disadvantage, so it will make the I think 1 hour, more than 1 hour video. So I'm not talking about the transformation. I will talk here natural genetic engineering, that is properties and advantage as well as the disadvantage. We will see the ti plasmid also, and what is the tDNA which is present in the ti plasmids, what is the size. So going to discuss. So let's get started. So agrobacteria are a group of the gram-negative, non-spore-forming soil bacteria, often isolated from the abnormally proliferating plant tissues. Means it is gram-negative bacteria. I think you know that about very well, that is gram-negative, gram-positive bacteria. So soil bacteria, it is also soil bacteria that is non-spore-forming, means it doesn't form the spores. Often isolated from the abnormally proliferating tissues. इट इज आइसोलेटेड, इट इज मीन्स इसको कहाँ से हम आइसोलेट करते हैं, तो प्लांट टिश्यू से इसको आइसोलेट करते हैं। दिस मोटाइल कंटेनिंग अप टू 6 फ्लैजला पर सेल। यहाँ पे क्या होते हैं 6 मीन्स इनकी एक सेल में कितने फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, 6 फ्लैजला प्रेजेंट है। सो दे आर मोटाइल, एरोबिक होते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मतलब मीन्स हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है बैक्टीरिया में, तो वहां पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज एरोबिक। रॉड शेप्ड होता है, rod shaped bacteria. We know that we are classifying the bacteria into the on the basis of the shape. So these are the rod shaped bacteria, have a rather slow from the 1 to several hours generation time, even under optimal laboratory condition. Means if I will talk about the Escherichia coli, so generation time is 20 minutes, but here we are talking about the 1 to several hours, means it is variation is here. It can be it may be possible in the 1 hour, or it may be possible 2 hours, it can be several hours. Okay, so moving to the next point, that is agrobacteria are able to catabolize the large variety of the metabolites. They exhibit the chemotactic behavior for the some plant exudates which they use in the nature to initiate colonization of a susceptible plant. Means what? It is same that agrobacterium, because in agrobacteria there is a ti plasmid is present. So ti plasmid contain the different genes, or we can say different regions in the ti plasmid. So there are the different regions which are responsible for the specific functions like catabolism. If I will talk about for the example, so like nopaline catabolism, octopine catabolism, so these are the genes which is responsible for the catabolize of the metabolites. Okay, so moving to the next slides, and here researchers in the 1970s resulted in the identification of the large plasmids in the virulent Agrobacterium strains, although we know that the many strains contain the plasmids unrelated to virulence. Means what?
बहुत सारे जो एग्रोबैक्टीरियम के जो स्पीसीज हैं वो बहुत सारे स्ट्रेन से अब तक डिस्क्राइब कर लिए गए, अब तक डिस्कवर कर लिए गए हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं, विरुलेंस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं, मीन्स प्लांट में डिसीज कॉज करेंगे। जी भाई, विल टॉक अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. It is causing the crown gall disease. What is crown gall? Just it is producing the tumor, means swollen part of any plant part is called as the tumor, that is uncontrolled growth, जहाँ पे कंट्रोल ग्रोथ नहीं होती है, इसके लिए कोई इनहिबिटर नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ उस सेल का एपोप्टोसिस नहीं होता है, तो वो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है वो सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ट्यूमर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन गॉल डिजीज। इफ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट बैक्टीरियम, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन। राइजोजिन पे क्या करता है, प्लांट में हेरी रूट डिसीज कॉज करता है। सो दीज आर द डिफरेंट। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल भी डिसीज कॉज नहीं करती। दैट मीन्स देयर आर द सम स्ट्रेन्स ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम विरुलेंस एंड सम स्ट्रेन्स ऑन द नॉन विरुलेंस। Genetic experiments indicated that a particular class of the plasmids, the Ti and later Ra plasmids, were responsible for the tumorigenesis. That a portion of these plasmids, the tDNA, was transferred to the plant cells and incorporated into the plant genome. Means here what is point saying that टीआई प्लाज्मिड इज देयर, ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे। जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो टीआई प्लाज्मिड की ही हुई थी, मींस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस की हुई थी। इसके बाद जो आए थे वो कौन आए थे, राइजोजिन्स आए थे, दैट इज आरआई प्लाज्मिड्स। लेकिन होता क्या है, ये ट्यूमरस कॉज करते हैं। कॉज करने के बाद क्या होता है, ये जब कैसे कॉज करते हैं, तो ये जब ट्रांसफर होते हैं तो जो प्लांट सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मीन्स उससे जाके इंटैंगल्ड हो जाते हैं, और जब उससे अटैच हो जाते हैं, उससे बाइंड हो जाते हैं अल्टीमेटली। उसके बाद जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होती हैं। ओके, इट वाज thus obvious to propose that Ti plasmids to be used as a vector to introduce फॉरेन जीन्स इनटू द प्लांट सेल। जैसा कि जस्ट अभी डिस्कस किया है, पहले इंट्रोड्यूस होने के बाद ही वो डिसीज को कॉज करती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, that is what is Ti plasmid. Ti plasmids are very large and tDNA regions do not generally contain unique restriction endonucleosides not found elsewhere on the Ti plasmid. अब क्या Ti plasmid में कहीं भी tDNA regions हो सकते हैं क्या? तो यस, कहीं भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एक रीजन होगा उस पूरे टीआई प्लाज्मिड है। सपोज ये टीआई प्लाज्मिड है, वी विल सी इन द नेक्स्ट डायग्राम, वी विल सी। सो उसमें क्या होगा, एक रीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, अगर आपने प्लाज्मिड्स की जो आइडियल प्रॉपर्टीज हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो अगर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें से एक होता है कि जो भी प्लाज्मिड होगा हमारा, उसमें क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, किसकी, एंजाइम्स की। जिस एंजाइम से हम कट कर रहे हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसकी एक खास बात होती है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की यूनिट्स रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर कैसे काम करते हैं, सपोज कोई प्लाज्मिड है, लेकिन अगर हमें वहां पे रिक्वायरमेंट कितनी है, 6। सपोज हमें 6 की रिक्वायरमेंट है, हमें अपने किसी प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है 6 प्रॉपर्टीज की, लेकिन अगर हमें 4 प्रॉपर्टीज मिल रही है किसी प्लाज्मिड में, तो हम कोई भी स्ट्रेटेजी अपना के 1-2 प्रॉपर्टीज को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। सो मैनिपुलेट कैसे करेंगे, सिंपल आरडीएनए टेक्नोलॉजी है हमारे पास। जब हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, तो हम उसकी वजह से क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। मींस जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेगा, कट करने के बाद क्या होता है, वहां पे ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होने के बाद हम दूसरे वेक्टर को एक वेक्टर से ऐड कर सकते हैं, और फाइनली लाइगेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम उनको ज्वाइन कर देंगे तो वो एक नया वेक्टर का फॉर्म ले लेता है, और इसी प्रकार से हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग टुडे। If I will talk about today how many vectors we are reading, literally so it is broad,
So many vectors are there like Plasmid, PVR 322, 327, PUC 18, 19, as well as the so many vector Plasmid, Plasmid. So these are the different techniques by using we are using. Therefore, one cannot simply clone a gene of interest into the tDNA region. चूंकि यहाँ पे क्या होता है, since here not present unique restriction enzyme sites, तो हम क्लोन नहीं कर सकते. ऑब्वियसली अगर हम कट नहीं करेंगे मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होगी, साइट नहीं होगी तो हम कट नहीं कर सकते. जब हम कट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हम किसी भी जीन्स को क्लोन नहीं कर सकते या फिर अपना जीन डीएनए हम वहां पे इंसर्ट नहीं कर सकते. फिर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं. तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी होती है इनडायरेक्ट, मीन्स टीआई प्लाज्मिड को हम किसी भी प्लाज्मिड के साथ, किसी भी ई कोलाई प्लाज्मिड के साथ क्या कर देते हैं, फ्यूज करा देते हैं. And this is called as the binary vector system. Okay, means two techniques are there, that is co-integration and binary vector system. So it is a little bit complicated process. So I will discuss in upcoming session. Just remember the two strategies. First one is the co-integration and second one is the binary vector system. These strategies involve the two different approaches: cloning the gene by indirect means into TI plasmid such that a new gene was synthesized with the valence genes on the same plasmid, or the cloning the gene into a T region that was under separate replication from the weak genes, that is called as the tDNA binary vector. Okay. So here next in the detail, I'm going to show you that is diagrams of the TI plasmid, that is PTI C58 and PTI ACH5. So you can see here, this is the diagram of the different types of the TI plasmid which is present in the Agrobacterium. This is the two types of the plasmid, two types of the TI plasmid which are present in the Agrobacterium tumefaciens. This is the nopaline type PTI and this is the octopine TPI. These are the name which based on the catabolism, Here present is nopaline catabolism and here present this is the reason why present is the octopine catabolism. Okay. So these are the two different TI plasmids and you can see here this is the tDNA region which is present in the PTI C58 nopaline type PTI plasmid, and it is that is ACH5 means PTI ACH5 which is present in the octopine type PTI. Here also tDNA present, and what is the size of the tDNA going to discuss I am here. So this is the valence region. Friends, this is very important region, because this is the tDNA region which get transferred into the plant, and this is the valence region which is supporting, which is working throughout the transferring of the gene into the plant. Means this is operon of the 8 valence operon, and these are the genes, that is valence A, B, C, D, E, F. There are so many different types of the operons which are working throughout the getting transferred the tDNA into the plant's genome. Okay. And this is ACC, you can see here, that is agropine catabolism, and this is the array of replication by which replication will be start, or we can say it will replicate. This is the transgene, that is transfer conjugated transfer gene, and this is agropine catabolism, octopine catabolism. This is same transfer conjugated genes. So these are the two different types of the TI plasmid which is present in the Agrobacterium tumefaciens. So moving to the next slides, and we will see that is actual T plasmid. Means, sorry, it is not plasmid. It is the region of the plasmid, means it is the tDNA. If I will talk, suppose जो मैंने आपको दिखाया है अभी, जैसे ये, ठीक है, इस रीजन को हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं. जब हम इस रीजन को जूम करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करेंगे हम इसकी. यहाँ पे क्या होता है, ये tDNA है, दैट इज नोपालाइन टाइप TI प्लाज्मिड.
यहाँ पे क्या होता है, ये लेफ्ट बॉर्डर होता है एंड दिस इज द राइट बॉर्डर विच इज द अप्रोक्सीमेटली 24 बेस पेयर. This is the nopaline synthase gene and this is the tumor something gene, tumor inducing, and this is the IPTG gene which is responsible for the cytokinin, and it is IAM, IA. These are the auxins genes which is promote the growth, and these are the direct repeats which are present in the left border. So आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, आई विल डिस्कस इन द डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा रीजन है जो प्लांट में पहले जाएगा, तो ये जो राइट बॉर्डर होता है ना फ्रेंड्स, ये सबसे पहले जाता है. और यहाँ पे काम कौन करता है, तो यहाँ पे जो विजिलेंस अप्रॉन होता है ना, उसके D1 D2 काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटीन्स जो मीन्स जो वीर ऑपरॉन होते हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं, बट जैसे जैसे काम आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ विजिलेंस D1 D2 की, तो वो क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं. क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो यहाँ पे एक हेलिकेज आता है जिसको अपन बोलते हैं वायलेंस सी, हेलिकेज का काम करता है. उसके बाद D1 D2 एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं. देन इट गेट स्टार्टेड ट्रांसफर. इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे, तो यहाँ पे एक सिक्रीशन सिस्टम होते हैं, दैट इज V4 सिक्रीशन सिस्टम. सो this is the most important point, which secretion system working, and so it is the T4 secretion system. Okay, so what we will do, we will remove this auxin, this is IAH and IAM as well as the IPT gene, and we can get insert our DNA in whatever we want to get transferred into the plant. We can remove this because these are not necessary genes which are present in the tDNA, so we can insert in place of the IAH, IAM as well as the IPT. So okay, I think you are getting. So it should be very easy. It is not that much difficult, but if you are not knowing, then sometimes like that what is, but it is ultimately it is easy. Moving to the next slide. What is tDNA? Molecular basis of genetic transformation of the plant cells by Agrobacterium is the transfer from the bacterium and integration into the plant nuclear genome of a region of the large tumor inducing TI or rhizogenic RA plasmid resident into Agrobacterium. Means what happens when it get transferred into the plant, then it will incorporate and it will cause the tumor induced, it will causes the disease, that is tumor. Tiplasmid or on the order of the 200 to 800 kilobase pair in the size. So its size is the variable, or we can say very long range, so 200 to 800 kilobase pair in the size. The transferred DNA, that is tDNA, is referred to as a T region when located on the TI or RI plasmid. T region on the native TI and RI plasmid or approximately 10 to 30 kilo base pair in the size. देखो ये जो साइज है वो किसका है, TI प्लाज्मिड का साइज है. अब TI प्लाज्मिड के साइज में TI प्लाज्मिड में tDNA होता है, तो जो tDNA का साइज होता है वो कितना होता है, 10 to 30 किलो बेस पेयर इन द साइज. ओके, The T region generally represent less than 10%. जैसे कि दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 to 30 और यहाँ पे 200 to 800 है, तो ऑलमोस्ट जो आएगा वो 10% के आसपास ही आएगा. Of the TI plasmid, some TI plasmids contain one T region whereas the other contain the multiple T regions. Okay, means क्या एक अगर टीआई प्लाज्मिड है तो उसमें क्या एक ही टीडीएनए होगा, तो ऐसा भी नहीं है. कुछ स्पीसीज ऐसी भी देखी गई हैं जहां पे एक से ज्यादा और मल्टीपल टीडीएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसमें, सिंगल टीआई प्लाज्मिड में. द प्रोसेस ऑफ द टीडीएनए फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड, its subsequent export from the bacterium to plant cell is results in the large part from the activity of virulence genes carried by TI plasmid.
So moving to next slides. T regions are defined by the tDNA border sequences. Already I have told in the diagram that border sequences will be present. These borders are 25 base pair in the length. They flank the T region in a directly repeated orientation. Friends, I have written, I think, in the diagram 24 base pair, but no problem. It is actually range in there 24 to 25 base pair. So if one option they will give what when question will be asked when question will be asked in the any exam, then if one option will be there, then definitely answer will be 25. But if range will be there, then you can give the answer 24 to 25 base pair. In general, the tDNA borders delimit the tDNA, but see below for the exception because these sequences are the target for the Vir D1 and D2 border specific endonucleases that process the tDNA from the TI plasmid. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था जो वायलेंस D1 और D2 होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और वो राइट बॉर्डर को लेके जाते हैं सबसे पहले मीन्स यहाँ से स्टार्टिंग होती है ठीक है इनिशिएशन होता है टू गेट ट्रांसफर there appears to be polarity established among the tDNA borders. Right borders initially appear to be more important than the left borders. Why the right borders are important? Friends, there are so many binding sites will be there, like docking sites. Means अगर किसी proteins को bind होना है तो कौन से site में bind होगा, कौन से end पहले जाएगा. So that's why in that way, in that manner, we are saying that right border is more important than the left border. First, the border sequence not only serve as the target for the Vir D1 and D2 endonuclease, but also serve as the covalent attachment site for the V2 protein. See, here it is saying covalent attachment means binding site will be present or docking site will be present for the enzyme for the Vir D1 and D2 protein. That's why we are calling it is more important. Right borders is more important than the left border because right border is giving the direction to get transferred the desired gene into the plant. Within the TI on RI plasmid or tDNA binary vectors, tDNA borders are made up of the double standard DNA. Cleavage of these double standard DNA border sequences requires the VD1, VD2 proteins both in vivo and in vitro. Means we cannot change the enzyme. ऐसा नहीं कि हम मतलब बैक्टीरिया में अगर हम करा रहे हैं या फिर प्लांट में इन विवो मीन्स नेटिव प्लेस में अगर हम करा रहे हैं तो वहाँ पे D1 D2 प्रोटीन लगेगा और अगर हम लैबोरेटरी कंडीशन में करा रहे हैं तो D1 D2 चेंज हो जाएगा. फंक्शन दोनों का सेम होता है तो हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं चाहे वो इन विट्रो चाहे वो इन विवो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. Advantage. What are the advantages? Advantage of using Agrobacterium to deliver the genome editing reagents include the high probability of the achieving single copy insertion. Protocols have been developed and optimized for the transforming many different crops. अगर मैं प्लांट की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके थ्रू मीन्स एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हमने उनको क्या किया ट्रांसजेनिक बनाया हुआ है. तो इसकी अगर हम देखें तो डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेज बहुत ज्यादा है जिसके लिए हम जब हम उनको क्रॉप को हम ट्रांसजेनिक बना लेते हैं मीन्स अपने इसके अलावा डिसीज डायग्नोसिस के लिए भी यूज होता है. यहाँ पे एडवांटेज में बहुत ज्यादा नहीं लिखा मैंने बट इट इज यूजफुल इन द ब्रॉड बेसिस. बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसके लिए यूज होता है. इसके अलावा वी कैन डेवलप द resistant by this because if you want to insert the resistant genes into the against any disease causing enzyme or disease causing pathogen, so you can do by this. Disadvantage में क्या आएगा? Need for the long tissue culture period to recover the transgenic plant. Yes, it takes times because it is done by the tissue culture. So tissue culture already it takes time, not that much, but if I will talk, so here some experts are also required because tissue culture is a technique means some skills that person should have the some skills.
So to tackle the problems during the tissue culture, because tissue culture is the technique where we have to maintain that is free of contamination or free from the pathogens of microorganisms. And the next one is the low frequency of stably transformed plants. Friends, one more advantage is here that the low frequency of stably transformed plant means if we will do the ऐसा नहीं है कि हमने अगर 1000 प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है तो 1000 में हो जाएगा। एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अगर हमने 100 प्लांट में करवाया तो ऑब्वियसली 10 ही होगा, 10 होगा या फिर 5 होगा, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। द नैरो रेंज ऑफ द जीनोटाइप विद इन द क्रॉप स्पीशीज दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म। और हम मैंने बोला एडवांटेज में कि बहुत सारी क्रॉप्स को हम इसके अलावा करते हैं, तो इसके इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी क्रॉप ऐसी भी हैं जिसमें ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की जो टेक्निक है वो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा यहाँ पे होस्ट रेंज लिमिटेशंस मींस होस्ट रेंज लिमिटेशंस है अगर, क्योंकि जीन ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोबैक्टीरियम में ही यूज कर सकते हैं। हम किसी भी स्ट्रेन्स को यूज नहीं कर सकते हैं, पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि तुमने एक बार चेक किया तो दोबारा प्रोबिंग नहीं करोगे, मीन्स हमें बहुत ट्रायल ट्रायल करने पड़ते हैं, उसके बाद ये सक्सेस होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ होस्ट है, किसी भी जनरल बैक्टीरिया को हम यूज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू चेक फर्स्ट बैक्टीरिया, वी हैव टू चेक नेक्स्ट, लाइक दैट, and it gets take lot of time as well as the lot of work as well as the and a lot of skills and spending money. So thank you. I think this video is helpful for you. Thank you so much, guys.